Hello everyone. Uh, Again today we are back with another very interesting problem from this series of alternating current. So into this problem it is given we have some RC circuit is given, both resistance and capacitor both are connected in series, and it is connected with a 200 volt source, and the frequency is given 50 hertz. So basically into this problem you can see here there are many parts here. So actually this problem is very good, especially just for basic understanding of AC circuit and for calculation of various parameters here. So we have to calculate here impedance of the circuit, we have to calculate the power factor angle, we have to calculate the power factor, current, maximum current, voltage across resistor, voltage across capacitor, maximum voltage across resistor, maximum voltage across capacitor, average power across resistor, average power across capacitor, current as a function of time, voltage as a function of time across resistor, and the voltage as a function of time across capacitor. So you can see here there are many parts here. So basically आप इसे बोल सकते हो कि for concept understanding, right, for basic understanding concept समझने के लिए it is a very good problem, right? So let's start solving this. So we have into this problem. First we'll draw the circuit here. We have this circuit here, we have one capacitor and one resistor, so they are connected here with source here is 200 volt 200 volt AC source is there, 200 volt AC source, and frequency of this source is given 50 hertz, right? So it is given 200 volts, so of course it is VRMS, right? VRMS, and C is also given here. The value of C, capacitance, is equal to 100 divided by pi, 100 by pi microfarad, and resistance is given as, resistance here is given as 100 ohm, 100 ohm. Fine. So RMS voltage is given here 200 volt, and the frequency of this source is also given. Frequency is 50 hertz 50 hertz की frequency दी हुई है. तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, we can calculate the value of omega here because omega will be required in calculations. So omega will write here 2 pi f. आप omega को निकाल के रख लो. So that will be 2 pi into f, which is 50, right? So this is equal to 100 pi. So omega की value हो गई 100 pi. Omega हमने निकाल लिया. Next we'll start solving each part here. So first we have to calculate the impedance of this circuit, right? So the first part is calculation of impedance of the circuit. So into this circuit there are two components, resistor and the capacitor. So impedance आप calculate कर सकते हो बड़ी आसानी से. So impedance हमें पता है, इस circuit की जो impedance होगी that will be under root of R square plus XC square, right? So first we'll try to calculate R. Already R is given, it is 100 ohm. So हमें calculate करना है XC. So XC हम calculate करते हैं. So XC हम लिख सकते हैं, we know capacitive reactance is, XC is nothing but 1 by C omega, 1 by C omega. तो आप लिख दो 1 by C omega. So 1 by C, so 1 divided by C. C is the capacitance and it is given 100 by pi microfarad. So 100 divided by pi, so pi will go to numerator here, so pi, and it is microfarad, यानी कि 10 to the power minus 6 से आपको multiply करना होगा to convert this into farad into omega, और omega already हमने calculate किया है 2 pi f, so it is 100 pi, so 100 pi. So from here you can cancel this, pi cancel. So XC की value जो आप लिखोगे यहाँ पे, XC is equal to 1 divided by 100, so 10 का power 4 into 10 to the power minus 6. So this you can write as 10 to the power 6 divided by 10 का power 4. So basically it is 100, right? So जो XC की वैल्यू आई, XC की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की, XC की वैल्यू हो गई 100 ओम, right? Means capacitive reactance, this capacitive reactance is 100 ohm. So now impedance, we have to calculate the impedance, right? So impedance हम calculate करेंगे यहाँ पे.
सो आप लिख सकते हो मॉड जेड दैट इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो आर की वैल्यू तो दी हुई है दैट इज़ 100। सो आप यहाँ पे लिखो 100 का स्क्वायर, सो 100 का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, एक्सी भी हमने कैलकुलेट किया, सो 100 का स्क्वायर। सो ये आपका हो गया, सो दिस इज 100 रूट टू, 100 रूट टू, so 100 root 2 ohm. So mod of Z, that is the impedance of this circuit is 100 root 2 ohm, right? So ये हमारा first part calculate हुआ. Next, power factor angle. So basically power factor angle phi you have to calculate here. What is the phase difference here? That phi we have to calculate. अब देखो phi calculate करने के लिए हम क्या करेंगे? What we can do here? It's better we write this in terms of phasor. जेड फेज़र कैलकुलेट करते हैं, उससे बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वैसे भी वी शुड मेक ए हैबिट ऑफ डीलिंग द एसी प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ फेज़र, कॉम्प्लेक्स नंबर के मेथड से सॉल्व करना आसान होता है, राइट? सो विल ट्राई टू राइट, सो फॉर दैट फर्स्ट व्हाट विल डू, विल राइट आर फेज़र, आर फेज़र। और आर फेज़र वी नो, आर फेज़र वी कैन राइट एट आर एंगल 0, और अब इसे सिंपली आर भी लिख सकते हो। सो और आर भी लिख सकते हो। सो बेसिकली आर फेज़र दिस इज़ नथिंग बट, आप देखो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 100, सो 100 आप ऐसे लिखो 100, सो दिस इज आर फेज़र। और एक्सी फेज़र, एक्सी फेज़र, एक्सी फेज़र को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सी फेज़र को आप एक्सी एंगल -π/2 भी लिख सकते हो, और इसे आप -j कैप एक्सी भी लिख सकते हो। सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम इन दोनों में से किसी फॉर्म का यूज़ करते हैं, राइट? सो एक्सी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 100 ओम, राइट? सो यहाँ पे हम लिखेंगे जेड फेज़र फॉर दिस सर्किट दैट इज इक्वल टू आर फेज़र प्लस एक्सी फेज़र, राइट? सो आर फेज़र की वैल्यू आप देख लो 100 है, 100 प्लस एक्सी फेज़र इज -j कैप इंटू एक्सी इज 100, सो 100, राइट? सो जेड फेज़र, ये हमें जेड फेज़र की वैल्यू आ गई, दिस इज जेड फेज़र, राइट? हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें फाई कैलकुलेट करना है, फेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करो, इस वेक्टर को आप ड्रॉ करो। उसके लिए रियल पार्ट इज़ 100, राइट? सो ये हमारा रियल पार्ट हो गया 100, ये 100 हो गया, और इसमें आप ऐड करोगे -j कैप 100, राइट? दैट मीन्स इस वेक्टर को ऐड करोगे, सो दिस इज़ 100, ये तुम्हारी 100 हो गई। सो राइट, सो आप कंप्लीट करो इसको। सो दिस इज 100, राइट? एंड दिस इज ऑल्सो 100, दिस इज ऑल्सो 100। तो इन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड करो, सो दिस इज जेड, राइट? और ये आपकी एंगल हो गई फाई। सो tan फाई की वैल्यू जो आप लिखोगे, tan फाई की, दैट इज 100/100, सो 100/100। सो दिस इज tan फाई इज इक्वल टू 1, यानी कि फाई इज इक्वल टू π/4। तो आपकी जो फेज एंगल हो गई, फेज एंगल इज π/4, फेज एंगल इज π/4, राइट? अब क्या करोगे आप? अब हमें नेक्स्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट द पावर फैक्टर, थर्ड पार्ट, सी पार्ट, पावर फैक्टर। सो सी पार्ट हम कैलकुलेट करते हैं। पावर फैक्टर वी नो cos phi is called as power factor, cos phi, and cos phi is nothing but r/z also, so r/z also। so r की वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, it is given, it is 100, and z already we have calculated here, z is how much? z is 100 root 2, so 100 root 2, right? so this is 1/√2, so power factor is 1/√2। so c part is calculated here। d is we have to calculate what is the current, current means RMS current, right? RMS current until it is mentioned maximum current अगर दिया हुआ है तो आप ये समझ लो कि in question they are asking about the RMS current। so IRMS basically into this circuit they are asking। so IRMS आप लिखोगे RMS voltage divided by impedance of this circuit, impedance, right? I is equal to V/R लिखते हो ना, so potential difference divided by टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल रेजिस्टेंस इस एसी सर्किट की जिसे हम इम्पिडेंस बोलते हैं। सो IRMS हम लिखेंगे VRMS डिवाइडेड बाई टोटल इम्पिडेंस। सो VRMS इज ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम, इट इज़ 200 वोल्ट। सो 200
200 डिवाइडेड बाई इस सर्किट की इम्पिडेंस, इस सर्किट की इम्पिडेंस कितनी है, जेड ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है 100√2, राइट. सो 100√2, 100√2, सो दिस इज इक्वल टू 2/√2, 2/√2, right. 2/√2 is nothing but √2 ampere, √2 ampere. So √2 ampere is the RMS current here, right. next we have to calculate what is the maximum value of the current, maximum value of the current. So E part, और हमें पता है कि IRMS की जो वैल्यू होती है, IRMS की जो वैल्यू होती है वो होती है I max जिसे हम I0 भी बोलते हैं, राइट, डिवाइडेड बाई √2. सो I max, I0 की जो वैल्यू होगी, I0 की वैल्यू आप लिख सकते हो IRMS इंटू √2, और IRMS हमने कैलकुलेट किया हुआ √2. सो √2 इंटू √2 दैट इज 2 एम्पेयर. So this is the I0, this is the maximum value of current flowing into this circuit, that is 2 ampere. So this was the E part. Next part, F part, voltage across R, voltage across R. So basically they are asking the RMS voltage across R, right. So voltage across R, so voltage across R आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे RMS current, right, into R. और RMS करंट तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, RMS करंट इज हाउ मच, √2. सो √2 इंटू रेजिस्टेंस इज 100, सो दैट इज 100√2 वोल्ट, राइट. सो दिस इज द F पार्ट. नेक्स्ट पार्ट G. नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में आप देखो क्या है, दे आर आस्किंग वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC, that will be equal to RMS value of current IRMS into XC, capacitive reactance. So IRMS की वैल्यू √2 है, so √2 into capacitive reactance XC की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की हुई है, XC की वैल्यू कितनी है, 100 है. so √2 into 100, so that will be equal to 100√2 वोल्ट. so ये आपकी आ गई VC. नेक्स्ट पार्ट आप देखो क्या है, नेक्स्ट पार्ट में दे आर आस्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, सो अक्रॉस रेजिस्टेंस मैक्सिमम वोल्टेज. सो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप करोगे मैक्सिमम करंट I max इंटू रेजिस्टेंस, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 2, सो 2 इंटू रेजिस्टेंस दैट इज 100, सो 200 वोल्ट, राइट. सो दैट इज द next part, I part. So into this they are asking what is the maximum voltage across capacitor, so maximum voltage across capacitor, so VC maximum voltage across capacitor will write here I max into XC, capacitive reactance. So I max is 2 into XC is 100, so 100 into 2 that is 200 volt, right. Next J part is we have to calculate the average power into this circuit, P average. So P average आपको पता है, average power into this circuit we can write as average power VRMS into IRMS into cos phi. This is the formula for average power in any AC circuit, VRMS. अब VRMS की वैल्यू तो हमें पता है, इट इज़ 200 वोल्ट, राइट. सो आप लिखो 200 वोल्ट, 200 इंटू IRMS. व्हाट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, IRMS इज √2, सो √2 इंटू cos phi की वैल्यू कितनी है, cos phi की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1/√2, सो दैट इज 1/√2, सो 1/√2, सो √2 कैंसिल, so average power is nothing but 200 watt, right. that is the average power. next part में क्या है, next part it is given they are asking average power across resistance, so average power across resistance. now formula for average power is VRMS IRMS, right, into cos phi.
into cos phi, right? Now we have to calculate the average power across resistance, and we know that across resistance current and the voltage both are always in the same phase. Current and voltage both are always in the same phase. इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है. फेज डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स द फाई इज जीरो हियर. सो cos phi will be equal to 1. So this can be written as Vrms into Irms, right? And here cos phi is equal to 1. Cos phi is equal to 1 because voltage and current both are in the same phase. So आप लिख सकते हो Vrms is equal to Irms. और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, Vrms को आप लिख सकते हो Irms into R, right? And into Irms. So this can also be written as Irms का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस. और Irms की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट की हुई है, राइट? Irms की वैल्यू कितनी है? Irms की वैल्यू है √2 एम्पेयर. सो √2 का स्क्वायर into resistance which is 100 here, right? So this is equal to 2 into 100, that is 200 watt. So this is the average power that is dissipated across resistance. Next part, L part. So into next part we have to calculate average power across capacitor. So average power across capacitor, और हमें पता है कि in case of capacitor voltage and current both are in a phase of pi by 2, right? In case of capacitor current leads by the phase of pi by 2 with the voltage, means the phi value is pi by 2 here. So if you write here average power Vrms into Irms into cos phi. So in case of capacitor this cos phi becomes 0. Cos phi will be equal to 0 because phi is equal to pi by 2. So average power across capacitor becomes 0, right? You should remember in case of inductor also the average power will be 0, because in case of inductor also there is a phase difference of pi by 2 between the current and the voltage. In case of inductor voltage leads by pi by 2. In case of capacitor current leads by pi by 2 with the voltage, right? So here the average power will be 0. And the last part, which is also very interesting and means very conceptual it is. So we have to find out here current as a function of time, total current as a function of time, voltage across resistance as a function of time, and voltage across capacitor as a function of time, right? So the M part, the last part here. So we have to calculate here what is the last part here? Last part is current as a function of time. So current as a function of time. So I as a function of time into this circuit we have to calculate current as a function of time. Now to calculate the current as a function of time, what we'll do here, we'll use the complex number technique here, phasor technique. So I we can write here V phasor divided by Z phasor, right? V phasor divided by Z phasor. Now what is V phasor? V phasor is V phasor here, if you see, observe here, the RMS value of RMS voltage is 200 volt, right? So we know Vrms is nothing but V max divided by √2. So the maximum voltage, maximum V0 is equal to √2 times of Vrms, that is 200 √2, right? 200 √2. In terms of phasor, V phasor you can write here, V phasor can also be written as 200 √2, that is the maximum value, angle 0, right? Because we'll assume here voltage here we'll assume is 200 √2 sine of omega t, right? So that is V phasor can be written as 200 √2 angle 0, because initial phase you can see here sine omega t plus 0, initial phase is 0 here. So 200 √2 angle 0, always here angle we write as the initial phase, right? Now Z phasor we have to write, we have to calculate. So Z phasor already we have calculated also. Z phasor, if you see here, observe here the value of impedance here, this is the form, right? 100 minus J cap 100, 100 minus J cap 100, right? So Z phasor we have already calculated here,
100 minus j cap into 100, j cap into 100. So basically mod of z already we have calculated, it is 100 root 2, right? And if you observe the phasor diagram here, this vector diagram, this is 100, this vector is 100, and into this we have to add this vector 100, right? And this is their resultant, right? This is the resultant. So this is basically the z phasor, and this angle is phi, which is pi by 4. So from here you can see here it is angle pi by 4 below this x-axis, right? So basically z phasor you can write as z phasor is equal to 100 root 2 angle of minus pi by 4, माइनस पाई बाई 4 लिखोगे ना, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे ये एंगल आप देख लो, ये जो जेड फेजर आ रहा है ये रेफरेंस लाइन है आपकी, ये रेफरेंस लाइन से पाई बाई 4 नीचे है, तो आप लिखोगे 100 रूट 2 एंगल माइनस पाई बाई 4. सो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वी राइट एज वी फेजर बाई जेड फेजर. सो वी फेजर हम लिखेंगे 200 रूट 2 एंगल 0, 200 रूट 2 एंगल 0 डिवाइडेड बाई 100 रूट 2 एंगल ऑफ माइनस पाई बाई 4. सो इसकी वैल्यू जो आएगी ये आएगी आपकी रूट टू तो कैंसिल हुआ, दिस इज कैंसिल, 200 बाई 100 दैट इज 2 एंगल ऑफ 0 माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 4, 2 एंगल पाई बाई 4. सो आपकी जो करंट की वैल्यू आ गई, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इज 2 एंगल पाई बाई 4, सो इसे आप कैसे लिखोगे, इसे हम लिखेंगे 2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, राइट? सो दिस इज 2 साइन ऑफ ओमेगा टी. ओमेगा तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ओमेगा इज 2 पाई एफ, राइट? सो ओमेगा की वैल्यू आप एक बार चेक कर लो, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई, सो 100 पाई, सो इट इज़ 100 पाई. सो 2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4. So this is the expression for current as a function of time, right? Next, so the next part into this we have to calculate here, voltage across resistance as a function of time. So this part is also very good. So voltage across resistor as a function of time, right? So that also we'll calculate here using this phasor technique, or you can say the complex number method. So V is equal to IR, right? So that is the beauty of this. If you use the phasor technique or the complex number, you can deal in conventional way here. So V is equal to VR phasor. We'll write here VR phasor, right? VR phasor हम लिखेंगे I phasor into R phasor. So I phasor already we have written here 2 angle pi by 4. So we'll write here 2 angle pi by 4, and R phasor is nothing but R angle 0, and R is 100. So 100 angle 0. So this becomes 2 into 100, 200 angle, and the angles will be added here. So pi by 4 plus 0, pi by 4, 200 angle pi by 4, right? So VR. So voltage across resistance phasor, this is 200 angle pi by 4, and this you can also write voltage across resistance as a function of time here. So if you expand this expression, so you can write here 200 sine of omega t plus pi by 4. So this is equal to 200 sine of omega is 100 pi t plus pi by 4. So this is the voltage across resistance as a function of time, right? And the last part here, you have to calculate voltage across capacitor as a function of time. So same concept we'll use here also, VCT. This will write as for first we'll calculate C phasor, voltage across C phasor. So that we'll write as I phasor, current phasor into XC phasor, right? So I phasor already we have calculated here is 2 angle pi by 4, right? So 2 angle pi by 4 here, this is the I phasor, right? So 2 angle pi by 4, 2 angle
pi by 4 into xc phasor. Xc phasor we know, xc phasor how to write in the starting only we have discussed here. xc phasor को आप कैसे लिख सकते हो? xc phasor को आप लिख सकते हो यहाँ पे देखो, आप xc phasor को आप लिख सकते हो xc एंगल माइनस पाई बाई टू, एंड xc की वैल्यू 100 है, सो आप लिखोगे इसे xc एंगल माइनस पाई बाई टू. सो xc दैट इज 100 एंगल minus pi by 2. So this will be equal to 2 into 100, 200 angle pi by 4 minus pi by 2, pi by 4 minus pi by 2. So basically अगर आप इसे इस प्रॉपर फॉर्म में भी लिख सकते हो, VCT voltage across capacitor as a function of time can be written as 200 sine of omega t plus pi by 4 minus pi by 2, right? So this can also be written as, voltage across capacitor as a function of time is 200 sine of ओमेगा टी. ओमेगा की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इट इज़ 100 पाई, सो दिस इज 100 पाई, सो 100 पाई टी पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, so this becomes minus pi by 4. So this is the expression for voltage across capacitor as a function of time. Thank you.